जी। तो पिस्टन क्रोन की क्लीनिंग बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर कार्बन जमा होता है, उसको आप लाजमी साफ़ करवाएं मैकेनिक से। अगर आपको इस तरह होता है कि अक्सर ओवर हीट हो जाती है गाड़ी, इंजन ओवर हीट होता है, तो फिर गैस कट ख़राब हो जाती है। गैस कट चेंज करने की जो है ना, हेड खोलना पड़ता है। जब हेड निकल जाता है, उसका उतर जाता है, तो फिर ये कंडीशन होती है पिस्टन के ऊपर जो है ना, कार्बन जमा होता है, कार्बन काफ़ी सारा। तो वो नई गैस कट फिट करने से पहले अगर आप हेड की फेसिंग करवा लेते हैं खरादी से, तो ये जो ब्लॉक है जिसके अंदर ये पिस्टन लगे होते हैं, ये क्योंकि गाड़ी में ही होता है, फिटेड होता है, तो इसकी सफाई फिटिंग से पहले लाजमी करवाएं एमरी पेपर के साथ और फिर पेट्रोल के साथ धो के, ताकि ये साफ़ हो। तो प्रेशर भी, कंप्रेशन स्ट्रोक भी सही बनेगा इंजन का, और वैसे भी इसकी लाइफ बढ़ जाती है। ठीक है जी, इस तरह ये वीडियो देखते रहें। इंशाल्लाह इसको न्यूट्रन क्लीन करते हैं। अभी पूरा जो ब्लॉक का जो ऊपर फेस है ये पूरा क्लीन होगा, तो ये फिर तब जाके हम इसकी गैस्केट और हेड की फिटिंग करेंगे। वीडियो देखते रहिए। टाइमिंग सेटिंग, निसान क्लिपर। दोस्तों सिलेंडर हेड फिटेड, और अभी टैपट की तैयारी करें। टैपट करेंगे 6 mm एंड 8 mm। 6 mm फॉर इनलेट और 8 mm फॉर एग्जॉस्ट। means 0.15 equal to 6 mm and 0.20 mm equal to 8। लगना Now और the first और cylinder बस is coming on top। हाँ सब सबर कर, पहले टैपट कर की ना फिर चाह पिएंगे। हाँ, गुड़ वाली चाय पे। Now the first cylinder tap is adjusted inlet valve। 10 सबर 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 लगना और थोड़ा जा, और हल्का जा, थोड़ा जा, और हल्का जा, और हल्का जा, वापस बस ठीक है, बस बस बस। लूज करना पड़ेगा।
side there are 12 valve cylinder, per cylinder, 2 inlet and 2 exhaust. Just free feeder gauge, partially tight. That is okay. इस तरह सीक्वेंस वाइज अभी बारी आएगी सेकंड नंबर की. थोड़ा जोर, बस. Second cylinder piston tappet valve, clearance, clearance, okay. होगा. Coming to exhaust valve, लगता होगा ना, लगना. थोड़ा जोर, थोड़ा जोर, और का जोर, बस ठीक. Nissan Clipper tappet clearance. .656cc engine. Exhaust tappet clearance is 0.20 mm and inlet valve clearance is 0.15 mm. Is in progress. चल बेला अच्छा फिर आओ. Now coming to third and last tappet clearance. Inlet थोड़ा जोर, valve should be in dancing position, लगना. fully up and नहीं, partially बस. moving to down. That is the point of tappet clearance adjustment. वापस कर. थोड़ा जोर, थोड़ा और, बस. देखो पावर पंप लगेगा नहीं, पावर पंप लगा भी नहीं. स्पेस पे चला और स्विच क्रॉस करे हो अलार्म दे दे. तो दोस्तों सिलेंडर हेड फिटेड, इंजेक्टर्स और स्पार्क लगा के ऑल कनेक्शन लगा दिए हैं सेंसर्स के. और अभी इंशाल्लाह अभी बेल्ट नहीं चढ़ाए, सिर्फ स्टार्टिंग चेक कर रहे हैं. ऑयल डाल दिया है और अभी इसके बाद ये काम है. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. चलो जी, चलो माशाल्लाह गोली स्टार्ट हो गई है खैर नाल. और रिक्वेस्ट है जाते जाते कि सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और ताकि आप लोगों को मेरे चैनल से तरह तरह की वीडियो मिलती रहें. गाड़ियों की मेंटेनेंस, क्लीनिंग, सर्विसिंग, कार्बोरेटर, थ्रॉटल बॉडी की सर्विसिंग, फ्यूल एवरेज की सेटिंग. सामने निसान स्लीपर, ऑल सेंसर्स इंडिकेशन ऑफ.
Thank you for watching. Goodbye.